Assalamu alaikum students. We will today continue with our topic tropism. We are studying tropism in case of plant movements. As you know, plant movements are broadly categorized into two types, tropism and nasties. We are studying tropism. Phototropism we have already discussed. Today we will try to understand geotropism. So, students, what is this geotropism? Geotropism is the geo means gravity of the earth. Geo stands for earth actually. Here, geotropism. It is the plant movements which are in which the response is shown towards the stimulus gravity. In which the response is shown towards the stimulus, and the stimulus is gravity. That moment, that tropism we call as geotropism. You all people know that some plant parts move towards this gravity and some move away from this gravity. But before discussing that, first we should know that what is this gravity. You are all aware, it is a simple term, gravity. Gravity is the force of pull which is shown by the earth. You know that earth moves everything towards itself, towards down. It is always in downward direction. It is called as gravity. Now here we have to study the responses of the plants, movement of the plant in response to this gravity, in connection with this gravity. Some plant parts, as I told you, move towards this gravity, but some move away from this gravitational pull. Whenever plant movement is in the direction of this gravity, towards this gravitational pull, then at that time we say that it is positive geotropism. But when the movement is away from this force of gravity, then we say it is negative geotropism. You all know that in case of plants, if we take the example of shoot and root, you know that root always goes downwards to the earth. That means this root shows its growth towards the force of gravity. That means the growth of root, moment of root shows positive geotropism. But if we take the example of shoot, it always moves in upward direction. It moves away from the gravitational pull. That means it shows negative geotropism. Now, I will give you an example of a potted plant. From that very example, the concept will get more clear. You can understand it well. Positive geotropism shown by the root. If we take the example of a potted plant, suppose this is a pot and it bears a plant. If we place this pot simply just like this on the surface of soil, this root, it will go straight downwards inside this pot because the gravitational pull is just like in this direction, downwards direction. इसका जो root है ये भी सीधा नीचे आ जाएगा towards this gravitational pull. But if we turn this pot, अगर हम इस pot को turn करेंगे just like this, अगर हमने इस pot को ऐसे turn किया, इसका जो बॉटम था अभी तक टच कर रहा था सॉइल सरफेस को, तो ये जो रूट था ये भी सीधे नीचे आ रहा था. बट नाउ वी टिल्टेड दिस, हमने इसको इस डायरेक्शन में लाया, ये इसी तरह से इसमें ये प्लांट फिक्स है, जस्ट लाइक दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर. यहाँ पे अब जो ये सॉइल जो रूट यहाँ पे है, इट हैज ग्रोन स्ट्रेट, बट अब ये पैरेलल आया टू दिस सॉइल सरफेस. अब ये इस पे ऐसे पैरेलल जैसे आया. तो अब इस रूट की, अभी तक इस रूट की ग्रोथ इस तरफ थी, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बॉटम जो इसका था इट वाज जस्ट टुवर्ड्स दिस सॉइल सर. अब हमने इसको टिल्ट किया, हमने इसको टर्न किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सॉइल सरफेस में, सॉइल में है, इस डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर फ्यू डेज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉट है अगर हमने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, तो वी विल ऑब्जर्व, हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद ये जो रूट होगा इस प्लांट का, ये बेंड हुआ होगा टुवर्ड्स दिस सरफेस ऑफ सॉइल। it will have, ये आइस बेंट गोमुत, ये क्या इस क्या लोग इस पता, it made it clear that the root moved, it changed its position towards this soil surface. That means the gravity has pulled it, इसने ग्रेविटी ने इसको खींच, इसने रेस्पॉन्ड किया टुवर्ड्स दिस ग्रेविटेशनल पुल, और इसने बेंड किया खुद को, एंड इट मूव्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. दैट मींस इट शोड दैट the root is positively geotropic. Root is positively geotropic. Shoot, we know it always moves away from the soil. It usually moves towards the sunlight. That it is negatively geotropic. तो this ये जो यहाँ पे इस फिगर से, इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि रूट जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, कैसे ये जियोट्रॉपिज्म को शो करता है. दिस वाज अबाउट जियोट्रॉपिज्म. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टिमुलस, दैट इज some chemicals are usually in case of plants, there are some chemicals which act as stimulus. और plants जो होते हैं, they show responses towards these chemicals. When the responses are shown against these chemicals, when the moments are shown against these chemicals, at that time the tropism is called as chemotropism. Chemotropism. In order to explain, in order to understand this chemotropism, the best example is if you people have understood fertilization. हमने fertilization को इससे पहले पढ़ा है, तो fertilization में chemotropism clear हो जाता है. You all people know that this is the structure of female reproductive organ in case of flower. ये जो stigma है, it is wet. यहाँ पे कुछ secretion, sugary substance होता है जो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को. आपको पता हो ये शुगरी सबस्टेंस इस स्टाइल में भी जाता है. होता ये एक केमिकल होता है. ये होता क्या है, इससे जब एक पोलन ग्रेन लैंड करता है ऑन दिस स्टिग्मा, इट एब्जॉर्ब्स दिस मॉइस्चर. ये शुगरी सबस्टेंस जो कि स्टाइल में भी गया हुआ होता है, तो इस ये करता है डायरेक्ट इस पोलन ग्रेन को, ये अपना पोलन ट्यूब जो जनरेट करता है, दैट पोलन ट्यूब गोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स दिस style and reaches this ovary. इससे यहाँ पहुंचना है, ओवरी में पहुंचना है, ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है, लेकिन उसके लिए इस पोलन ट्यूब को स्टिग्मा से होके, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचना है. यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको एक केमिकल सब्सटेंस ने डायरेक्ट किया. एक केमिकल सब्सटेंस ने इसको यहाँ पे स्टिमुलस दिया कि आपको नीचे आना है. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे पोलन ट्यूब ने जो डाउनवर्ड मूवमेंट शो की, दिस इन रेस्पॉन्स टू द शुगरी सब्सटेंस, द केमिकल substance, this is called as chemotropism. Further जो process होती है, that is a fertilization. You people have already studied that. लेकिन यहाँ पे आपको chemotropism समझना है कि एक chemical substance किस तरह से plant की movement को असरअंदाज करता है. How it affects the movement of, यहाँ पे जो plant का part, यहाँ पे जो movement हुई है वो pollen tube की हुई है. pollen grain ने pollen tube की movement को show किया है in response to this chemical substance which was present at this very position, at this stigma. This is called as chemotropism. This is all about this. Inshallah, in our next class we will continue with another type of stimulus, we may say. We have to study hydrotropism and some other tropisms. Those tropisms we will study in our next class. Thanks.